अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। भाई कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और रोज़े रख रहे होंगे। तो यार सीन ये है कि मैं जब यहाँ पे आया था ना ऑस्ट्रियन, तो जब भी हम लोग ये मिल्क पैक या दूध वगैरह जो लेने जाते थे, तो उसका ये सीन था कि यार मैं देखता था कि यार यहाँ पे भी वही हिसाब है, लाइक आपने फुल फैट वाला लेना है तो उसके अलावा बॉक्स, और वही हिसाब जैसे आप हमारी तरफ वो जो मिलावट वाला सीन ही चल रहा होता। खैर ये नहीं कि यहाँ पे मिलावट वाला सीन है, वैसे मतलब एक फ़न पार्ट ये है कि लाइक जो वाले होते हैं दूध वाले, तो वो जैसे पाकिस्तान में बेच रहे होते हैं, कहते हैं कि ये महंगे वाला जो है कहता है ये मिलावट के बगैर है। बाकी जो मिलावट वाले होते हैं कहते हैं ये रास्ते में एक टूटी आई थी, तो एक टूटी वाला पानी जो है मैंने उसमें डाला तो ये थोड़ा सा उसको हो गया, 2 टूटियाँ 3 टूटियाँ, इसी तरह मिल के जितने आते हैं ना, तो वो दूध जो है ना वो उसकी प्योरिटी कम होती जाती है। वेल मेरे एक दोस्त है, वो उसने मुझे ना बताया, ऑस्ट्रियन है, तो उसने कहा यार यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको जो दूध वो जो बेचते हैं, तो वो कह रहा है कि यार 50 to 60 सेंट उनको मिलता है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे जो 0.5% फैट वाला, यानी कि जो पतला से पतला दूध है, मैंने कहा वो भी अब 1.9 या 1.10 यूरो उतने का मिलता है। तो मुझे फिर दोस्त ने कहा यार यहाँ पे फार्म से प्योर मिलता है, सुबह सुबह जाके लेना होता है ना। तो मैंने कहा चलो फिर तो यार एक्सपीरियंस करना चाहिए, सुबह सुबह जाके जो है ना वो लेते हैं। ये बाय द वे सूरज नहीं है, ये चांद निकला हुआ है, चेक करो क्लियर। सूरज भाई इधर से निकल रहे हैं, अभी नहीं आए इधर का। यार पंगा ये है कि सुबह सुबह जाना पड़ता है, ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं, बट फिर भी सीन ये है कि रोज़े चल रहे हैं, तो हमने अभी सैरी की थी और वैसे भी मैं शिफ्ट पे था, तो शिफ्ट के बाद सीधा वहाँ पे हम जा सकते हैं। नॉर्मल डेज में सुबह सुबह जाना यहाँ पे मुश्किल होगा, बट हमने तो जस्ट आजमाना ही है, देख लेते हैं। और 2-3 लीटर तो दूध भाई लेंगे। यार इतनी प्यारी जगह पे फॉर्म आ गए हैं, वाह भाई वाह, लेकिन गोबर वाली स्मेल हल्की हल्की आने लग गई, पता चल रहा है फॉर्म आ गए हैं। ओके, तो ये यार इधर बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो, और ये देखो आलू भी हैं और यहाँ पे अंडे भी होंगे और देखते हैं कुछ सब्ज़ी भी होगी होपफुली। सो लेट्स सी क्या क्या मिलता है, आपको भी दिखाते हैं साथ में। अच्छा तो यार ये इधर जो है ना टाइम लिखा हुआ है, सुबह 7 से लेके 9 बजे तक, एंड देन शाम के 6 से 8 बजे। और बाकी भी यार गोबर की स्मेल ठीक ठाक आ रही है। माहौल ज़रा दिखा ले तो इधर वाला। चलो जी फॉर्म देखते हैं थोड़े से, सही ओपन फॉर्म में। ये देखें, मैं भी कहूँ क्यों स्मेल आ रही है, बहरहाल चेक करें यार। सो क्यूट यार, ब्यूटीफुल। और उधर भी खड़े हैं, सब जो है हमें दूध दे रहे हैं। फुल ऑर्गेनिक प्योर दूध, और जो इसका रेट आ रहा है ये भाई, ये प्राइस है 2022 से ना, 10/9/2022 से, तो 1 लीटर आपको मिलेगा 80 सेंट का। ओह तुसी कितों आए हो, तो सस्ता है यार, फुल ऑर्गेनिक, हाँ प्योर दूध। ये सिर्फ गाय का है ना। अच्छा यार बाकी यहाँ पे ये आलू पड़े हैं और ये अंडे, तो इनके रेट थोड़े महंगे हैं क्योंकि ये फुली जो है ना बायो है। और बाकी जो है ना आलूओं का जो है ना सीन वो ये है कि 5 किलो 5 यूरो के ना। ओके, आलू ठीक है वैसे यार, बिल्कुल जो है ना वो ताज़े आलू हैं, ताज़े वाले, हाँ बिल्कुल। सो फ़िलहाल यार मैं पहुंचा हूँ, अभी दूध को रखते हैं फ्रिज में और बाद में इसको जो है ना हम बॉयल करेंगे और उसके बाद जो है ना इससे चाय बनाएंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि इसकी चाय कैसे बनती है और कितना जो है वो ये फैट वाला दूध है, ठीक है।
तो अभी मैं इसको रख रहा हूँ फ्रिज में, बाद में जो चाय बनाते हैं और चाय भी मिलते हैं आपको। सो गाइस अभी जो है वो मैं दूध निकाल रहा हूँ। ओ तेरी खैर, ये क्या सीन हुआ पड़ा है, किसी की बोतल गिरी है और वैसे की वैसे इन्होंने छोड़ दी है। बस यार कुछ लोग यहाँ पे जो है ना वो नमूने टाइप होते हैं। बस दूध हम उठाते हैं और इसको हम बॉयल करते हैं, उसके बाद इसकी चाय बनाएंगे। और एक चाय का जो शौकीन है, और जो मेरी वीडियो में भी आया था, उसने भी आज मुझे कॉल की थी और कह रहा था कि भाईजान चाय पिलाओ। मैंने कहा ओके। उसको नहीं पता कि ये दूध जो है कोई और है, लाइक डिब्बा शिब्बा वाला नहीं है। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, और उसको भी मैं बताऊंगा नहीं, एंड भी बताता हूँ। चलो जी, दूध हमारा हो गया है बॉयल। और एक इलेक्ट्रिक का ये है कि इसको साइड पे करना पड़ता है, इसको बंद भी कर दो ना इधर, फिर भी ये बाहर आ जाना है इसमें। चलो इसको एक दो बॉयल और देते हैं। I know who is coming. I know who is coming. Oh, assalamu alaikum. How are you, brother? Come here. Give me a hug. Yeah, we are together once again after a long time. After a long period. Yeah. Like 1 month we didn't see each other. No, not 1 month, work but stress. around about 2.5 weeks or 3 weeks, I guess. Yeah. Wow, it's a long time. It feels like Long a lot time. of Like, time. normally our meeting, official meeting, always comes with With- a cup of tea. You know. With Pakistani based chai tea, and I started doing it by my own now. Faisal teach me how to do that Pakistani chai because Okay, it's yeah, got giving you the energy for the day. Oh yes. And it is much better than Red Bull or Monster energy drinks. Yeah, really I best. prefer it. I prefer it. Like And today I have a different combo for the tea. You know. you different combo. You check the black box. Black box. Yes. This is secret. Yeah, This is, secret. what's in it? I'm curious now. Whoa, waffle and Yeah. Nutella. I see. Yes, waffle, and there is also cookies, which Oh. yeah, The cookies in the bottom. yeah. I have to make it a little bit warm there. Yeah, in No the worries, microwave. it's looking great. So we have a different combo for As today. you teach me, like when you drink Pakistani chai, you have to eat something sweet like cake, Yeah. and because it tastes delicious with it. I prefer this combo, you know, every time Nice. with the cake. Today I don't have cake, so I have this. Yeah, I always Faisal got my bag with cake, and after Oh, yes. that, if you don't know, we going to the gym. And after eating the cake, we go to the gym. Yeah, we're gonna burn it. Yeah. To burn it. We are smart guys. Another thing, today you're gonna notice I have a different kind of milk. Different kind of milk. Yeah, really different. You see how much I got? What is this? This is milk, boiled milk. Yeah. Boiled milk. Yeah. Huh? First, you will taste or then check that if it's a different from the other we usually use or not. And let's see. Okay, I'm gonna give you a review, guys. Yeah. If it tastes better than previous one or Yeah. this Because one is much better. while I will upload this vlog, you're gonna see that which from where I bought this milk. Oh. Yeah. It's gonna I've be- recorded everything, you know. I'm gonna be curious now. Okay, let's just guess how cheaper would be this milk per liter. 1 liter milk now costs is €1.70 in the supermarket. Yeah, in the supermarket, €1.70, like Yeah. the best one. Yes, the best one. Yeah, and for your information, this is a full fat milk, you know. Yeah, 3.5. Yeah, 3 point more. I think it's more than 3.5. Okay, and I think it's gonna be like €1.40. Okay, so the cheaper you predict is like €1.40. Yeah, I bought it like €1.20. The cheapest. I bought it like 80 cents. 80 cents. Yes. Where did you bought it? What is your secret, Faisal? Are you working with You're the gonna- KGB? You're gonna see on the vlog, you know. You're gonna notice on the vlog how cheaper I bought it. It's a full organic. Organic milk. Yes, full fat milk. Yeah. Wow, I'm surprised a little bit. And For for 80 cents, it's the half
Yeah. of the supermarket. Yes, and it was like more than 2.5 liters, and I paid only €2. More than 2.5. Yes. Wow. Like almost, Surprised. nearly 3 liters. Okay, done with the talking. Let's make a taste review. Oh yes. With the smiley. So, with cheers. the smiley cheers, I'm gonna say. Yes. I can taste the Fatness. the fatness in it. Okay. It's a lot of fatness in it. It is not. It's like tastes natural, like from the farm to here. Yeah, from farm to fork. Yeah, from farm to fork. It is tastes good. It tastes Yes. good. And this waffle is for you. It's Just for me? try it, yes, only for Only you, because for I only had like 4 waffles or 5 waffles, and I ate all of them, and I left one for you. Wow, it's looking delicious, by the way, guys. If you see it, Yeah. the richness of Nutella, waffle, and the Pakistani cheese, And I made the this waffle. best combination ever. And you can give again a message to the audience, because I'm gonna end this video. Don't work for the money. Yes. Let money work for Let you. money work for you. So see you guys in the next video. Make sure to thumbs up, like, share, and subscribe. See you inshallah in the next video. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Goodbye.